आप लोगों से कहनी थी कि जैसे कि मिसेस नौशाबा खलील ने कहा कि व्हेन यू स्टेप आउट टू डू एनी वर्क तो एक दूसरे का साथ जो है वो ही काम को आगे बढ़ाता है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी एकेडमिक कमेटी की तरफ से कि आप सबके सर्कल्स में, फैमिली, फ्रेंड्स और प्रोफेशनल सर्कल्स में, इफ़ यू कैन आइडेंटिफाई पीपल जो एकेडमिक्स की फील्ड से हैं, आपके घरों में या सर्कल्स में लड़के लड़कियां या कोई प्रोफेशनल्स हु वुड बी इंटरेस्टेड इन वॉलंटियरिंग देयर टाइम फॉर आवर एकेडमिक कमिटी। तो ये बहुत हमारे लिए इट्स ऑन गोइंग, हम अपनी टीम बिल्ड कर रहे हैं, आगे के वक्तों में बहुत काम है। यंग लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिकॉज उनके अपने पोर्टफोलियोज के लिए भी बहुत अच्छा है टू शो दैट दे आर working with organizations like DPSF. So please do reach out to people in your circle who might be interested in offering their time to work with the academic committee on our schools. एक और शुक्रिया जो है मैं खुरम शहजाद का और जमीयत के जो बोर्ड है उनका, बिकॉज इन लोगों ने हमारे साथ जो अभी तक सपोर्ट किया है हमको in everything that we do. In fact, इनकी जो principal है सितारा जबीन, she joins us for our academic committee. So we are really working together with Jamiyat. They are major stakeholders in what we are doing, and in the coming times we would like to continue working with them. So thank you, Bhai Kuram. Okay, that's it. Before going to lunch, नहीं, जस्ट जी शायद साहब है ना, मैं उनको दावा दे रहा हूँ कि उनकी कुछ राय और ख्यालात जो है हम सुने। ऐसा ही ये बता दूँ कि ये हुनर फाउंडेशन में बहुत पेश है। तो असलम भाई को मैंने कहा था कि वो आज आए, लेकिन वो इस्लामाबाद में हैं, तो उसने उन्होंने कहा कि मेरे बिहार पर भी शायद से कहना वही कुछ कहेंगे। तो शायद आप प्लीज। मैं भाई शहीद सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। भाई शहीद के बाद मैं चाहूँगा कि भाई अब्दुल कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद रस्म को वक्त दीजिएगा। थैंक यू। थोड़ी बहुत तालियां तो पहले बज गई, तो इसका मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे नोट्स हैं मेरे पास, मगर वो मेरे ख्याल में इवनिंग टी तक ये नहीं ख़त्म होंगे, बट आई विल कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट। There were several things that were spoken earlier. जो हमारी स्कूल के प्रोग्राम का आपने बताया was really music to my ears. Where you want to take it, how you want to take it, and I think it's fantastic. सेंसस की बात हुई, हमारे ब्रादरी में there are lots and lots of champions. There are ladies की मैं अभी बात करूँगा, whether it is Noshaba, whether it is Noshaba's daughter, I don't know how many of you know. She is the head of Aga Khan Hospital in the breast cancer. She's a surgeon and she's the head. And I think that's fantastic. Sonia Butler, a name that we can all be proud of as a clothes designer, fashion designer, and giving a lot of value to this country. Shaista and our other ladies in the education department. Besides that, I think there are so many other women that at least some of us will know who have really made a mark in the country.
इस वक्त बरादरी की बात हो रही है, मगर मेरे ख्याल में ज़्यादातर हम लोग जो हैं वो मुल्क की फिक्र ज़्यादा कर रहे हैं और करनी भी चाहिए। आपने हैप्पी स्कूल की बात की थी, मैं तो उसको देख रहा था कि हाउ डू यू मेक इट फर्स्ट एज फार एज द आर्किटेक्ट इज कंसर्न, यू शुड डिमांड that it should be happy architecture. So when you walk in, you can have a very boring architecture, sad architecture, angry architecture, and happy architecture. You should demand that of us. So that becomes very important, and that's the beginning. As Shaista said, कि स्कूल आने के बाद उनका दिल नहीं जाना चाहिए वापस आने का। And by the way, थोड़ा सा मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये साउथ सिटी हॉस्पिटल वाले जब मेरे पास आए तो मैंने इनसे कहा कि आपकी टारगेट मार्केट कौन है? तो उन्होंने कहा हर वो फर्द जो बाहर जाके इलाज करा सकता है। So I just mentioned, I said that means it's either as good or better than abroad. Which means कि इस वक्त हम में से जो भी हॉस्पिटल गया है एज अ पेशेंट और एज अ केयर टेकर, वो हमेशा वो डॉक्टर से पूछते हैं कि जी वो हमें छुट्टी कब मिलेगी। दैट इज अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन। मैंने कहा फिर आपका सवाल ये होना चाहिए कि डॉक्टर साहब मैं 2 दिन और ठहर जाऊँ। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डिड, अल्हम्दुलिल्लाह। Because आज the way that hospital is made, it doesn't feel like a hospital. So here I'm saying that there's immense happenings in our community. और I think उसका census बनाना बहुत ज़रूरी है, where we can feel absolutely proud. Donations की बात होती है, I don't think we should be talking about donations at all. Because सब आ रहे होते हैं, अरे भाई को आपको donate करते हैं। No. I've never gone for donations. I've always said, do you want to be a part of this? आपने शुरू में कहा सही कि भाई you were sorry that you called us here on a Sunday. We all had a choice. We didn't have to come. But we came because we thought it was important. टाइम की बात हुई, आपने कहा कि टाइम निकालना पड़ेगा। नहीं, अल्लाह निकाल देता है आपको टाइम, तो आपको उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। एंड आई एम अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट, वेयर द हेड ऑफ द रेड क्रॉस was here 3-4 years ago and he called a few of us. मैं उनके साथ बैठा हुआ था, तो he said कि you know there's one reason why I'm here, कि हम तकरीबन हर इस्लामिक मुल्क में हैं और ये मुझे पता है कि जी चैरिटी देनी आपके लिए बड़ी ज़रूरी है, वो उसी से नेकी मिलती है। बट व्हाट इज इट अबाउट पाकिस्तान, which is one of the poorer countries amongst all the Islamic countries, that we get the maximum amount of charity from Pakistan. Okay, तो वो मेरी तरफ पहले देखा, I said I don't know why, कोई वो नहीं है कि भाई, खैर उन्होंने सबसे पूछा, सबने कोई खातिर का जवाब नहीं दिया उनको। Then he said, okay, you know, amongst all the cities of Pakistan, the rest of the cities combined and Karachi alone gives a maximum charity, which he was saying that Karachi gives the maximum charity in the world. Alhamdulillah. So here, देखिए हमने बरादरी ने, मैं आपको बता रहा हूँ, अल्लाह ने, अगर आपने कुछ शुरू किया है सईद या और लोगों ने जो चीज़ें शुरू की हैं, वो अल्लाह ने आपको चुना ये करने के लिए। आपका या हमारा कोई इसमें कोई हमने को तीर नहीं मारा जी। He has chosen us to do this work. अगर आप
किसी को सदका दे देते हैं या किसी को आप खैरात दे देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो आदमी आ जाता है सामने आपकी नेकी कमाने के लिए, अब वो अल्लाह ने भेजा आपको। इस वक्त मैं आपको बताऊं, मैं हुनर फाउंडेशन के लिए मैं एक दिन मंशा साहब के पास गया। मैंने कहा मंशा साहब, अच्छा उनके लिए मैंने बहुत काम किए, मैंने उनकी बिल्डिंगें बनाई है, तो मैंने कहा मंशा साहब आपने कभी को अच्छे काम किए? तो कहने के मतलब, मैंने कहा को अच्छे काम किए दुनिया के लिए? तो कहने के तो क्यों पूछ रहा हूँ? मैंने कहा इसलिए मैं आपसे करवाना चाह रहा हूँ अच्छा काम। मतलब मैंने कहा मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा, ऑल आई एम सेइंग इज डू यू वांट टू डू समथिंग गुड? सोच के कहने लगा यार शायद यार मैंने कभी कुछ नहीं किया। नाउ हियर वाज एन एग्जांपल कि Allah has never chosen him to do anything good, and something good is not कि आप जाके को तीर मार दें। तीर यही है कि आपने इंसानियत के लिए कुछ कर दिया, as far as I'm concerned। अगर नहीं किया तो you are the unfortunate one। So here I'm saying as far as fundraising is concerned, अगर आपके दिल में है तो आप देंगे, अगर नहीं है तो नहीं देंगे। And at least I don't feel bad कि अगर कोई नहीं देता पैसे, I feel sorry for him कि यार अल्लाह ने भी इसको तैयार नहीं किया। And that's how it is। आप मुझे बताएं, इंडस वैली स्कूल आर्ट स्कूल है, how many of you believe in art? मगर मैं आपको बताऊं उस ज़माने में जब होंडा सिविक 2.5 लाख की होती थी, I went to people, मैं किसी से 20 लाख मांग रहा हूँ, किसी से 5 लाख मांग रहा हूँ, and everybody gave for an art school। शायद फिरोज साहब being one of the first ones कि मैंने इनसे कहा कि यार आपने अभी एक नई फैक्ट्री बनाई है ब्लॉक्स की, आप मुझे सारे ब्लॉक्स इंडस वैली के लिए दे दो, इंक्लूडिंग द कंपाउंड वॉल। एंड आई हैव टू हैंड इट टू हिम एंड आई हैव टू गिव हिम अ क्लैप दैट आई थिंक नागरिक के लोग द वे दे कंट्रीब्यूटेड एंड विदाउट इवन थिंकिंग इंडस वैली, Shamoon Sultan, that we can be proud of Khadi being one of the most successful brand in this country। Indus Valley के graduate हैं। Sonia started with Indus Valley, then she decided to go abroad। Shaista is a graduate of Indus Valley, and a lot of the daughters of the brotherly and sons have gone to Indus Valley। So besides that, you can be proud that Indus Valley was started, founders being brotherly के, TCF, the Citizens Foundation, started between Arshad and myself, और ये अफगान वॉर की वजह से हुआ था ये, because उस ज़माने में किडनैपिंग शुरू हो गई थी और carjacking and all that। TCF को हमने ये देखा कि अगर ये लोग पढ़े लिखे होते और इनके पास कोई जॉब होता तो ये काम नहीं कर रहे होते ये। एंड दैट इज हाउ TCF began। एंड वी सेड यार 1000 स्कूल बनाएंगे और सिर्फ कच्ची आबादियों में, और किसी बाहर के लोगों से हम पैसे नहीं लेंगे। नो फॉरेनर के आप फोर्ड फाउंडेशन के पास पहुंच गए, कहीं और पहुंच गए, कहीं और पहुंच गए, किसी से हमने ये फैसला किया कि हमारा प्रॉब्लम है, हमने क्रिएट किया है, वी हैव टू फिक्स इट। 1000 स्कूल्स वाज अ ह्यूज टास्क। इस वक्त मैं आपको बता दूं अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव 1600 स्कूल्स, 1600, and it has become the largest educational NGO in the world, which is I think something to be proud of। अब एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ as far as education is concerned, is that आप मैट्रिक करा दें, इंटर करा दें, A-levels करा दें, थोड़ा सा आपने उस पर टच किया, आपने भी टच किया कि कोई आपके पास आए, आप उससे पूछेंगे कि भाई तुम करते क्या हो, वो कहता जी मैं मैट्रिक किया हूँ। अरे भाई करते क्या हो? जी करता तो कुछ नहीं है।
इंटर किया हुआ है जी, बीए किया हुआ है, as far as I'm concerned useless. Yes, आपको थोड़ा सोचना सिखा दिया, आपको खत पढ़ना सिखा दिया, अखबार पढ़ना सिखा दिया, but you have to have some talent, you have to have some vocation. आज in the West who we are following कि वे O levels कर लें, A levels कर लें, they are saying all this higher education is useless. You have to have some skills. और आज ये कह रहे हैं 4 साल की डिग्री जो है वो बेकार चीज़ है। आपने सबने अलजेब्रा भी पढ़ी होगी, कैलकुलस भी पढ़ी होगी, एनालिटिकल ज्योमेट्री पढ़ी होगी, आपकी एक इतनी सी काम में आई है कभी? यूजलेस। अच्छा, आई वाज एट द बॉटम ऑफ माय क्लास because it was a system that I was not interested in. When you talk of a happy school, I tell you, I swear to you, I was not happy in grammar school because I used to fear going to class. कि मुझे कुछ आता ही नहीं था. I was not good in education, but I was good in everything else, which is what I wanted. I was the captain of my cricket team, I was captain of my athletics team, captain of my hockey team and the boxing team. So here I'm saying that I wish कि और भी चीज़ें वहाँ होती, अगर वहाँ टेक्निकल एजुकेशन होती, अगर बाकी चीज़ें होती, और because I was a zero in class, that's why I became an architect. Because मुझे और तो पढ़ाई आती नहीं थी, but I knew that I was very creative. Now here, first class first भी ज़रूरी होते हैं, मगर वो कभी टॉप पे नहीं पहुँचते फर्स्ट क्लास फर्स्ट। आई होप आप में से कुछ ना कुछ थर्ड क्लास होंगे स्कूल में, एंड दैट्स व्हाई यू हैव रिजन, बिकॉज आपकी सोच अलग थी, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो गए थे। क्या अब आप टीचर को क्या कहेंगे आपने होमवर्क क्यों नहीं किया? वो पढ़े तो उसमें पढ़ा वो लगता था स्किल कि जी आज मैं क्या करूँगा, इसलिए कि आपके नाना का तो इंतकाल हो चुका था, तो एक दिन दादा का भी हो गया था इंतकाल, तो वो 2 दिन तो वैसे ही वो चले गया, वो दोबारा नहीं हो सकता था। तो यू हैव टू बिकम वेरी क्रिएटिव अबाउट व्हाट टू मेक एक्सक्यूजेस ऑफ, एंड आई वाज वेरी क्रिएटिव। एनीवे, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट। तो TCF के बाद इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट ए हुनर फाउंडेशन। असलम खालिद साहब और माई सेल्फ, असलम मेरे ताया के बेटे हैं, तो वो पाकिस्तान रिवाइवल के चेयरमैन थे। वो जब रिटायर हुए तो मेरे पास आए, कहने कि यार शायद क्या करूँ मैं, बताओ। बहुत सारे कंपनीज मेरे पीछे पड़ी हुई हैं, शौकत अजीज इज आफ्टर मी कि यार तुम ये मिनिस्ट्री ले लो, ये मिनिस्ट्री ले लो, मैंने कहा नौकरी नहीं करनी है। ये मेरे घर में बात हो रही थी, मैंने कहा व्हाई डोंट वी स्टार्ट a vocational program, and he said done. It did not take more than 10 seconds for him to decide and for me to say yeah let's move it, because वही बात थी कि मैट्रिक के बाद क्या करेगा आपने, तो अगर गरीब है तो आपने तो और खराब कर दिया उसको। पहले तो वो गाड़ी वाड़ी तो धो लेता था भाई, या वो ठेला चला लेता था, now he can do nothing because he is a matriculate. So here I am saying it is very important. DMS school में there was a technical section जो भुट्टो साहब ने besides other दवाइयाँ in the country, उन्होंने आके इसको खत्म करा दिया कि भाई ये टेक्निकल बेकार चीज़ होती है, आर्ट्स बेकार चीज़ होती है। अगर आप किसी आर्टिस्ट को जानते हैं तो you have to believe they are much higher thinking plane than all of us, which includes Sonia Vatla. So उनका level ही अलग होता है सोच का। How could you? Because they can think creatively, and they think beyond you. So हुनर फाउंडेशन started, और इस वक्त हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 10 कैंपस हो गए। एक कैंपस बन रहा है इस वक्त अल्लाह वाला टाउन में, जो एक हमारे बरादरी के एक सोशल वर्कर हैं, जिन्होंने कहा कि 2000 गज की ज़मीन मैं आपको दे रहा हूँ और इसके पैसे भी दे रहा हूँ और मैं आपको बनवा के दूँगा,
आप इसको डिज़ाइन आप करा दें, आई विल नॉट क्वेश्चन। अल्लाह दरवाजे खोलता ही रहता है। तो अभी आप देखेंगे अल्लाह वाला टाउन, इट्स राइट ऑन द मेन रोड, जो दाखला है अल्लाह वाला टाउन का, एंड इट्स ओनली मेंट फॉर गर्ल्स। I would say, Saeed, that by the time our next meeting is held, inshallah, I want to see women here. And ultimately, 51%, or let's keep it 50%, must be women out here. That I think is absolutely important. You can clap. ये एक चीज़ अभी बहुत इम्पोर्टेंट हुई है, जो हमारी बरादरी की कंट्रीब्यूशन है, जो भी इनिशियली हमारे बड़ों की सोच थी, we were up here as far as the other communities were concerned. They did not try. आज we are not anywhere as a, जो लोग बाहर के लोग देख रहे हैं, they know पंजाबी सौदागरान है, they know कि यार they are into the best businesses that you can think of, alhamdulillah. Magar as far as being together is not there. तो अभी जो हुआ ये TMS का टेक्निकल सेक्शन जो था, वो सुल्तान चावला साहब ने कहा कि यार ये खाली पड़ा हुआ है। हम इनके पास गए थे कि हमारे लिए एक हुनर फाउंडेशन की छोटी सी जगह गए थे, तो वो 2 हॉल थे, छोटे छोटे नहीं थे, मगर इससे आधे साइज के थे, और ये मिला के इतना बड़ा था। कहने लगे भाई ये है, ये ले लो। और उसके बराबर में एक DMS का दफ्तर होता था, दिल्ली मर्केंटाइल सोसाइटी का या जमीयत का, उसकी छतें गिर रही थी, दीवारें गिर रही थी, कुत्ते थे उसके अंदर। उन्होंने कहा भाई आप ये भी ले लें, ठीक कर रहे हैं इसको। तो बिस्मिल्लाह वहाँ से हुई, वो अल्लाह को करनी थी। और इस वक्त दैट बिकेम अ वेरी वेरी गुड कैंपस, जो कैंपस को दिखा के लोग पैसे दे देते थे उसमें कि यार। Then we went and partnered with the city of Wales in UK. यार इनको छोटा नहीं बनाना, जो लोग हैं यहाँ। तो इस वक्त जो हुनर के जो ग्रेजुएट्स हैं, they get an international certificate. तो ये दुनिया में कहीं भी काम कर सकते हैं, which is very very good. तो ये दुबई भी गए और बाकी जगह, और एक जो बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो रही है जी, that all of us know, ये जितनी एडवांस कंट्रीज हैं, sort of एडवांस, इनके अब बच्चे पैदा नहीं हो रहे। अभी जर्मनी ने कहा है कि यार 1 मिलियन अब भेज दें पाकिस्तान से। भाई आप ये 10,000 बना सकते हैं एक दिन में, मगर बच्चे नहीं बना सकते आप 10,000 एक दिन में। So alhamdulillah, while everybody is complaining कि यार ये population explosion हुई है, alhamdulillah यार, we are making it ready for the other countries as far as I'm concerned. But they have to be trained, they have to be skilled. So I'm saying today that far more important than higher education is अगर 60-70% of our youth can get into vocational training, Pakistan will be a totally different country. आज जो आपका बाहर से फॉरेन एक्सचेंज आता है, इंशाल्लाह उसमें 1 या 2 zeros ऐड हो जाएंगे। That I believe in that. Germany is saying that, Japan is saying that. जापान में आधे स्कूल बंद हो गए, इसलिए कि बच्चे ही नहीं हैं उनके यहाँ। And there are various other countries. Australia is saying यार अगर उसको पेशकश पकड़ना आता है, we will take it. उसको नेशनलिटी दे देंगे हम उसको। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, but we don't have to, अभी जो भी हमारी पॉपुलेशन है, we can afford कि उसमें से 30% बाहर चली जाए, and the rest of it, the best have to remain here. और इस वक्त हमारा गोल ये है कि हुनर फाउंडेशन या पाकिस्तानी अगर कोई ट्रेन होता है, तो people should say I need a Pakistani and nobody else. इस वक्त कोई इंजीनियर आता है और आप कहते हैं यार ये जर्मन है, आप कहते हैं बस यार अब तो हमारा काम हो गया, बिकॉज ये जर्मन है या जापानी है। Why can't that be Pakistani? That is our vision, and that's how we're going to start. तो मैं अभी ये कह रहा था कि we are fortunate
कि जो हमने हुनर फाउंडेशन शुरू किया लड़कों का, अभी हमारी बात ऑलमोस्ट पक्की हो गई है कि वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट अ वुमेन्स कैंपस in that area for the brotherly of the Riyaz Masjid area, which would be very, very good inshallah. And I really have to appreciate that. तो उसके मैंने नक्शे बनाने शुरू कर दिए हैं और मैं बहुत शौक से नक्शे बनाता हूँ इन चीज़ों के, इसलिए कि we have to show कि ये ब्रदरी का है ये, and it has come out of Pakistan. ये सिटी एंड गिल्ड्स वाले जो आए हमारे कैंपस देखने, एंड दे सेड आई हैव नॉट सीन अ कैंपस लाइक दिस एनीवेयर इन द वर्ल्ड. आई फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ दैट कि यार देखो, पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी सोच है, पाकिस्तानी पैसा है और पाकिस्तानी कारीगर है जिन्होंने बनाया ये. सो वी कुड फील वेरी प्राउड बिकॉज देखिए हम दुनिया में किसी से कम नहीं है हम, एंड वी हैव प्रूवन इट इन द 50s and 60s and 70s. हर सरबरा दुनिया का पाकिस्तान आया है, इंडिया नहीं गया. सो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो जिन्नात कौम है कि आज भी वो थोड़ा सा ब्रेक लगा दिया था, और वो मैं किसी वक्त में आपको बताऊंगा कि अल्लाह ने क्यों ब्रेक लगाया हमारा. अल्हम्दुलिल्लाह. मगर आज भी अगर आप देखें, पागल औरत वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई. क्यों चढ़ गई? She was a Pakistani. She had that will. She had that resolve. और ऐसी आपको लाखों मिल जाएंगी. और मैं आपको बता रहा हूँ अभी जो दुबई का एक्सपो हो रहा है, जिसमें 192 मुल्क हिस्सा ले रहे हैं, और वो सब के सब आके दिखा रहे हैं कि हमारा मुल्क सबसे बेहतर है. सबके अलग अलग पवेलियन हैं और ये वर्ल्ड एक्सपो है, ट्रेड एक्सपो नहीं है. सब आके बताते हैं कि हमारा मुल्क सबसे बेहतर है. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने मुझे उसका हेड बना दिया है कि जो भी वहाँ होगा आपकी जिम्मेदारी है, आप दिखाएं पाकिस्तान को. एंड इट हैज़ टू बी वन ऑफ द टॉप 5 पवेलियंस. वेरी वेरी बिग आस्क कि आप जब जाते हैं ऐसे एक्सपो में, एक दिन आप जाते हैं तो 5,000 रुपये खर्च करके, तो उसके बाद नहीं जाते. तो पहले ही आप एक फैसला कर लेते हैं कि यार जापान की पवेलियन में जाना है, जर्मन, ब्रिटिश, ये मैंने कि यार पाकिस्तान का नाम आएगा ही नहीं उसमें, उस फहरिस्त में. हाँ, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप कहेंगे हाँ यार पाकिस्तानी देख लेते हैं चलो, इसलिए कि हमारा सब पे एक्सपीरियंस है. जो भी एग्जीबिशन में हम गए और जो भी पाकिस्तानी स्टॉल ये पवेलियन है, आप यूं करके गुजर जाते हैं कि यार मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है इससे, बिकॉज दे आर एम्बैरेसिंग. नाउ हियर आई एम सेइंग कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी हमारी पवेलियन बन रही है, बिल्डिंग बन चुकी है, अंदर बिल्कुल तैयार हो गई है. और मैं आपको पहली दफ़ा बता रहा हूँ कि उसका नाम हमने रखा है, कैप्शन जो होते हैं लोगों के, इनक्रेडिबल इंडिया, झूठ बोलते हैं वो. देयर इज नथिंग इनक्रेडिबल अबाउट इंडिया. आप वहाँ जाएं तो इट्स बदबू आ रही होती है उनके शहरों में. तो हमने ये कहा कि यार झूठ नहीं बोलना, जो भी हम अपना कैप्शन लगाएंगे, एंड इट हैज़ टू बी ए कैप्शन जो लोगों को ड्रॉ करके लाए. इट शुड बी अ रिडिकुलस कैप्शन बट नॉट दैट वी आर लाइंग अबाउट इट. कैप्शन हमने रखा है पाकिस्तान द हिडन ट्रेजर. आपको पता ही नहीं कि हमारे पास क्या क्या खजाना है. पीपल लाइक दीज वुमेन, पीपल लाइक ऑल ऑफ यू. हम सब खजाना है भाई, बट वी आर हियर बाय चॉइस, बिकॉज हमें दिखाई दे रहा है वो खजाना. आप में से सब जो यहाँ बैठे हुए, यू कैन मेक अ मार्क एनीवेयर इन द वर्ल्ड, बट वी चूज टू स्टे हियर एंड फॉर वेरी गुड रीजंस. सॉरी मैन, I have to say these things because I see the future of Pakistan. Abhi we have taken off, or inshallah that's how we're going to go. And
I believe that because हमने उसकी रस्सी पकड़ी हुई है, वो छोड़ सकता है हमारी रस्सी क्या? ये अल्लाह के हुक्म से बना ये मुल्क, तो is he not going to take care of us? हमने तो कोई लड़ झगड़ के पैलेस्टाइन कब्जा नहीं किया, पत्ता नहीं हिलता जी उसके हुक्म के बगैर, तो उसके हुक्म से बनाया नहीं है। हम सब कहते हैं यार ये मुल्क तो अल्लाह ही चला रहा है, हाँ जी अल्लाह ही चला रहा है। We have to believe that, and the moment we believe that, we don't have to worry about it यार। कुछ भी हो, हमने तो पूरी अपनी कोशिश कर ली इस मुल्क को पसंद करने के लिए, मगर वो नहीं होने दे रहा। And we've seen a very recent example of COVID also. मेरे पास है तो बहुत कुछ कहने को, बट आपने टीचर्स की बात की। एक there is a new institute out here which you may have known. There is a university out here that has been formed that is giving a degree for teachers. आप जाके 4 साल की डिग्री ले सकते हैं in education. It has been started by Salma Ahmed, who is Shehzad Roy's wife. I have helped a little with the planning of that campus, and मैंने उनसे पूछा था अच्छा वो क्या कर रही है, पागल औरत है, हार्वर्ड की ग्रेजुएट है, and what she is doing कि वो सिंध गवर्नमेंट से उन्होंने वो लिया है कैंपस एक गुलशन इकबाल से आगे जाके राइट मुड़ता है, तो नेम ऑफ दैट इलाका दूरबीन जी। तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ सिंध गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स को उनका लेवल ऊपर करूंगी मैं। हाउ कैन यू इमेजिन 4 साल बाद जब ये टीचर्स निकल के, और ये उनकी वो है, दे हैव अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट, so you have to go and teach back in government schools. So it's a fantastic initiative. So if you would like to send a few teachers there, please talk to Salma, because मैंने उनसे कहा था कि यार मैं अगर आपको भेजूंगा कुछ टीचर्स तो you have to take them on. तो I think I'm just giving you that lead कि one can do that. That I can, ऐसी अच्छी बातें बहुत लंबी हो सकती हैं, but I think the last thing I want to say कि please believe in this country. ये कहीं नहीं जा रहा except ऊपर। Thank you. Thank you, Father. Thank you for the keynote address. Very, very motivating. Very motivating. अच्छा, I think अगर और किसी को बात करें, हाँ, जी रात, अब्दुल्ला please. Please come and my name is Abdullah and the profession I am starting. So just to listening the discourse that happened in the 2 hours, and I can see, first of all, thank you Siksa for inviting me over here. So there are certain points which I'd like to highlight. Okay. Number one is when we are going with this organization, I think the plan would be there for the governance and the transparency, that there has to be some goal setting and the gradual monitoring, which I'm sure you must be addressing. In the education, what you have said कि हम इसको सबको O levels कर देंगे and going forward like program. What you have to see is कि आपको environment को consider करना पड़ेगा. What sort of environment from people are coming in the community mobilization, and for that probably you have to have some counselor and counseling sessions, and you have to discuss the parents, in fact, what are their problems and how you can bring the child into the fold of the commercial activities. Personally, I see putting all the students, categorizing either they are fit for O levels or they are fit for the Cambridge or they are metric. You have to put some category in this. And maybe some are good at vocational trainings, so you have to park them in that direction. Some are good at going for O levels and doing the masters. So you have to have some sort of a bucketing of the students at the initial level.
And thereafter going forward, you see, when you're opening up the campuses in other like part of the city or whatever, then you have to see and mobilize your program and taking it to the graduate high level. So, and we can further discuss, but this is my initial thought on this. Coming to the business side, जो मनसूर मुबीन साहब देख रहे हैं, I think individually supporting 200,000 rupees or 500,000 rupees to an individual will not serve the purpose. We are like a community of entrepreneurs. We can see either they can sort of some collaboration, 2 or 3 people can combine and create some venture, or like the individuals who are like struggling for their business or whatever, they can be bringing the fold of some commercial organizations. I think all the stalwarts are here, and I've been dealing with all the corporate organizations. सबके साथ मैंने deal भी किया है कुछ लोगों के साथ. So you see, maybe if there's a pharma company, you need a distributor for that. I'm just quoting an example. If they can collaborate and create some network for pharma distribution for you, the retail sector, they can help you in that. So why they are putting the energies on the 200,000 rupees and there is no monitoring, you just mobilize it in that way. So I think the important is to have the credibility, the backing, and they can give you back to the society. So, Shahid Saab ka jo point hai in the vocational training, I fully endorse what he's been doing, commendable work, but I think there has to be some nexus of the education with the vocational training and thereafter the employment. I've seen with the Aman Foundation, and they have the program like 500 graduates for Indus Motors, 500, and they are training for this industry. If they are collaborating like in the, internationally, what we have been happening in Dubai, what is happening, you train the people according to that source. You have to do this. Because what I am narrating is just my experience from the corporate sector, have been dealing. Second, the important point for the whole community, and you have to like consider, is the technology. If you are not well versed with the technology, we are just doing the mechanical, we are in the 4th generation of the industrial revolution, and the technology is the name of the game. So if you are not embracing the person and the technology and investing in the technology at that time, I think going forward after 2-3 years, whatever plan that we are making over here, wo aapko nahi chalegi. You have to have like a continuous benchmarking for the technology now with the robotics and the data analytics, data sciences. So you have to train the people like this. You have to have like what is next for 5 years that you need to invest now. If you are like for the education, if you are putting up something in the technology, I think वो आपके लिए बहुत बेहतर है. And for the data sciences, data analytics, ठीक है आपके vocational training भी क्योंकि बच्चे को आप एकदम से कुछ सिखा नहीं सकते हो, but you have to have invest in this. And तो मेरा point business में यही है collaboration and maybe some sort of a venture capital or like a growth capital fund that 5 or 7 entrepreneurs can fit in and say maybe we are like 100 million or just इसने कहा बिलाल ने कि like 2 billion or whatever. We can have a fund because the monitoring is essential. Giving them 200,000 rupees, वो 3 साल बाद पता भी नहीं हुआ कहाँ गया. You have to have monitoring KPIs maybe under sort of a bed. जैसे like हम लोग private equity में देखते हैं. You have to have a private equity type of a concept. Can you give back to the society? And maybe in sort of a venture capital fund also, because if they are like want to invest in some technology, they can come up with bright ideas. We do, but we do monitoring also on this and having a proper governance structure. And the last point, I know that lunchtime हम सब busy होंगे, because I have been like किसी ने mention किया member community बहुत देती है, because I have like experience of dealing with all the corporates. The important point for the community at this stage, I think you need to have a youth professional forum or a Sodagran professional forum, maybe under like umbrella of Daily Punjab Sodagran Foundation. You see, what you can do is, what I'm saying is like you start with 50 people, 10 people from all the professions. I know like the professionals, we have doctors, we have entrepreneurs, we have architects, we have chartered accountants. So like you can just start with 50 people, 10 persons for every discipline. They can create a think tank for the community, for the business, and for the development. Thereafter, as a subset of this professional forum, you can have a youth forum. And there, like all the persons who have been outside education, brought up, they can share their international experiences. And in that bed, you have like 50 or 100 like the students.
So what they will do, they will provide career counseling also. So what is important is to have a career counseling sessions, which is totally missing. We have been providing funds, we have saying like you do this venture, but important is because the demographic of the Pakistan, where this 50% population is less than 30 years of age, we need to capitalize on the demographic. So this is an important point. I think my suggestion to the chair would be to have like a professional forum, just like we have in the communities, women community. You can see there's a live example, running example, and then as a subset of this, you can have a youth forum, and that you mobilize the youth. Until unless you will find the workers, the volunteers, the ideas, brilliant ideas, and they have the capacity to take it forward for the next 5 to 10, 15 years, 20 years. You have to ensure continuity of this organization, and this is the only way you can do this. Because online they can contribute, they can commute, whatever. So this is my suggestion. And lastly, like the vocational training में ladies की भी बात किया, ladies professional forum. I think the fashion industry you are sitting here, like some sort of a collaboration and make it relevant to the industry, whatever vocational training. I think that would be very helpful. That's it, sir. Thank you, Ravi. And I think there are very valuable suggestions you have just made. और आपके सिलसिले में ये था कि आप थोड़ा सा टाइम देंगे तो आई थिंक आज आपने जो मुंह खोले वो कुंडी खोले. आज आपने जो बातें की हैं उसके लिए आप थोड़ा टाइम दे दीजिएगा. But they are very valuable suggestions. आज इन्होंने कमेंट किया कि सैटरडे अवेलेबल है. अच्छा, वेरी गुड. अच्छा, मैं फिर मेरा ख्याल है कि क्योंकि हमें घर वापस जाना है, नौशाबा का बहन का ख्याल है कि विमेन एम्पावरमेंट जो है वो कुछ नहीं, ऐसा बड़े सादगी से कहा आपने. अभी जो एक्सपीरियंस करते हैं वो घर जाके देखेंगे वहाँ जो मुँह बना होगा, तो इसलिए अब बहुत ज़्यादा बनने का मौका नहीं देते. अच्छा, तो मैं बस सबका शुक्र अदा कर रहा था. और स्टार्टिंग विद हमारा जो उस्मान अल्लाह वाला JPSD बोर्ड है, भाई सिद्धार्थ, आपकी तरफ से आज खुरम भाई आए हैं, बहुत शुक्रिया. अमर भाई, आपका बहुत ख़ास शुक्रिया इसलिए कि आपके बगैर स्कूल आगे नहीं बढ़ सकता था. आपने उसमें जो कंट्रीब्यूट किया है, उसकी मैनेजमेंट संभाला है, आपका ख़ास तौर पर. और मैं एक बार आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का. और मैं तमाम अपने बड़े भाई साहिबान को स्टार्टिंग विद भाईजान, आपका बहुत शुक्रिया. आपने पूरा मॉरल सपोर्ट किया हुआ है पीछे से. आपको पता नहीं है कि मैं थोड़ा बहुत जो भी कुछ काम किया है वो आपकी वजह से कर रहा हूँ. तो थैंक यू वेरी मच. शाहिद भाई, फिरोज भाई, बहुत शुक्रिया आपका आने का. थैंक यू वेरी मच. शाहिद, आपका भी बहुत शुक्रिया. वेरी मोटिवेटिंग. जो हिस्सा आपने रखा हुआ है उसके लिए एक और दिन हम मुकर्रर करेंगे और फिर आप उसको मुकम्मल कीजिएगा. भाईजान, वन सेकेंड आपका. सलाउद्दीन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और भाई सुल्तान, आपके लिए शुक्रिया के साथ आप खुद बड़े आई थिंक इसके बिलीवर हैं कि ख़वातीन जो है एक बहुत बड़ी ताकत है जिनको हमें ज़ाया नहीं होने देना चाहिए. तो आपने एक लेडीज़ फोरम बनाया था, उसको वापस एक्टिव करें और उसको लेके आए मेन स्ट्रीम में, ताकि ये जो हम इस वक्त इस प्लेटफॉर्म से एक सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आना चाह रहे हैं अपनी बरादरी के अंदर, वो इसी तरह से पैदा होगा. वो 50% पॉपुलेशन को पीछे रख के नहीं हो सकता. तो आई थिंक आज भी बहुत सारी अच्छी बातें हुई हैं. खलील भाई, आपका शुक्रिया. नौशाबा बहन, आपका बहुत शुक्रिया. सोनिया साहिबा, आपके सिलसिले में बहुत कुछ बातें हुई हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूट बनाए, आप ख़वातीन को बुलाया, फैशन डिज़ाइनिंग उसको सिखाएं और अगली दफ़ा के लिए तकरीर याद कर दीजिएगा. थैंक यू. सही, आप अगर माइंड में करेंगे इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा. सॉरी टू टेक अ मिनट मोर. मैंने एक्सपो की बात की थी. इसमें इसका गोल जो है हमारे पवेलियन का, दैट इज फॉर टूरिज्म. सो वी आर शोइंग एवरीथिंग अबाउट पाकिस्तान, द हिडन ट्रेजर्स ऑफ पाकिस्तान. और आई अश्योर यू कि हम भी जब जाएंगे, देयर विल बी वेरियस थिंग्स दैट यू विल बी सरप्राइज्ड. आई डिडंट रियलाइज दैट दिस वाज इन पाकिस्तान. खैर, तो बीच में आके वो IMF ने कहा कि आप बंद करें.
आप खर्च नहीं कर सकते पैसे, एक तरफ आप उनसे भीख मांग रहे हैं, दूसरी तरफ आप जाके एक्सपो बना रहे हैं। तो मैंने रजाक दाऊद साहब से कहा कि हम जब ये टूरिज्म की बात कर रहे हैं तो वी शुड ऑल्सो बी लुकिंग एट आवर बिजनेसेस। जब लोग आएंगे यहाँ तो दे शुड एटलीस्ट सी व्हाट वी आर डूइंग। तो उस वक्त ये मैंने आइडिया दिया उनको कि व्हाई डोंट वी राइट डाउन लिस्ट ऑफ 100 टॉप बिजनेसेस ऑफ पाकिस्तान where we can be proud of. यार ये 100 businesses हैं हमारे who we proud of. And I have to tell you that the first one who raised his hand was Khalil साहब। हमने ये कहा raised his hand because we decided कि सबसे 2-2 करोड़ रुपए लेंगे बस, only 2 करोड़। And he told me कि यार तुम कम मांग रहे हो। And I said I don't want more than 2 crores. And we told the government कि आप फिक्र न करें, we will raise the funds. और इस वक्त but we wanted names that we can be proud of. तो एक हमने लिस्ट बनाई और उसमें खैर तारिक भाई also was a part of that list और ये लिस्ट बनाई थी TDAP ने। तो ये मैंने उनसे कह दिया था यार I don't want people like Malik Riaz and I don't want people like that who we are not proud of, who we are embarrassed about, and people who give that access, ये मेरी requirement थी। तो इस वक्त मैं ये कह रहा हूँ कि I have about 20-25 names left. उसमें if anybody that you know who want to be a part of that, please let me know and I can put your company's name there. और उसके साथ और बहुत benefits मिल जाते हैं the moment you have the name there. वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। थैंक यू। ओके जी, बहुत शुक्रिया आप सबका एंड लेट्स गो सॉरी तारिक भाई विल क्लोज द सेशन एंड देन वी गो फॉर लंच। मैंने भाई सईद से याद की कि मैंने शायद आधा मिनट कम कोटे से लिया तो उसको इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। एक तो जो बहुत बड़ा एक चैलेंज आ रहा है कोविड की वजह से, जो माएँ बहुत दिलचस्पी लेती हैं पढ़ाई में, वो ये महसूस कर रही होंगी कि अब बच्चे खुसूसन लड़के जो इंटरेस्टेड ही नहीं है स्कूल जाने में, पढ़ने में इंटरेस्टेड, उनको किस तरह निकाला जाए, ये इसके लिए हमको जो है एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट चाहिए होंगे जो पूरी दुनिया में शॉर्ट है, इवन अमेरिका में अवेलेबल नहीं है। तो एक तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, हमने इंशाल्लाह इस पर काम करना। दूसरा, आज हम एक नई चीज़ सीख गए, वो रशाबा बहन ने होम सोशोलॉजी पढ़ाई जा रही है और मैं चाहूँगा कि हमारी जो इंशाल्लाह फ्यूचर में प्रोग्राम है मदर्स ट्रेनिंग का, हमने बहुत खूबसूरत अपने लैब प्लान किए और उसमें सेकेंड हाफ में जो है ना वो मदर्स आके मुख्तलिफ ट्रेनिंग लेंगे। तो उसके लिए मैं गुजारिश करूँगा कि आप वक्त निकालिए और हमारे उन ख़वातीन को, बच्चियाँ जो पढ़ रही हैं उनकी माएँ जो आएंगी, उनकी घरेलू जो आपने आज हमें पढ़ाया है वो उनको पढ़ा। बहुत शुक्रिया। शुरू तो वहीं से होगा। Speech you taking to answer?